big political row breaking out of Bengal where Chief Minister Mamata Banerjee has launched an all-out attack on Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath over the stampede deaths. But in doing so has ended up attacking the cultural spiritual heritage of Mahakumbh, while she wanted to target the mismanagement of crowds at the ongoing pilgrimage in Prayagraj. She called out the religious congregation as Mrityu Kumbh. Listen in. মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন ৩০ জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? কত হাজার হাজার, ৮বার আগুন লেগেছে। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের, সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান ১৫ ঘন্টা ২০ ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে ২০০০ টাকা, এক কাপ লাল চাও ৫০০ থেকে ২০০০ টাকা। তারা যে জায়গাটা গিয়ে স্নান করবে সেটা আলাদা, ভিআইপিদের স্নানের জায়গাটা আলাদা, আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন, বিষাক্ত করেছেন মহাকুম্ভের পবিত্র জায়গাটা। All right, among other things, she also said that while VIPs get privileged treatment from the government, the commoners are struggling with the arrangements. But then why attack Mahakumbh? Not the first Indie Bloc leader to be doing so. There is, of course, a political reaction coming in. For example, from Bengal, leader of opposition Shubhendu Adhikari. Listen in. प्रभु जी को यहाँ स्वामी विवेकानंद की धरती से अपील कर रहा हूँ, हिंदू समाज, संत समाज जोरदार विरोध करे। ममता बनर्जी बंगाल के मुखिया थोड़ी देर पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शी सेड ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। ये हिंदू के ऊपर आघात, महाकुंभ के ऊपर आघात। अखाड़ा से संत समाज आवाज उठाइए और स्वामी विवेकानंद श्री चैतन्य देव की धरती बंगाल में हर क्षेत्र में ममता बनर्जी का पुष्प दल दान करिए। अब सच्चा हिंदू है तो राजनीति से ऊपर उठ के ममता बनर्जी का इस अपशब्दों की जोरदार विरोध करे। महाकुंभ में अपमान, हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री हाय हाय, हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री हाय हाय, हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री हाय हाय। So BJP picking it up strongly. Perhaps it suits Mamata's politics in Bengal to be panning Hindu traditions in the manner in which she did. And not the first, as I mentioned, Chief of Samajwadi Party Akhilesh Yadav also targeted Mahakumbh yesterday, saying that the government is wasting money on the occasion. Let's listen in to him. कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। More breaking coming in on the same story after Mamata's remarks on the Kumbh, calling it not Mahakumbh but Mrityu Kumbh. Andhra Deputy Chief Minister Pawan Kalyan has taken on the Bengal Chief Minister, slamming Mamata for her comments. Pawan Kalyan has said that Mamata is hurting the faith of Hindus with her statement and that it is unacceptable
Let's listen to him. Pawan Kalyan. These kind of situations in this kind of unfortunate incidents, I think one should not be confined to government. We have to go beyond it. And I urge all the senior political leaders, they're experienced, they're the helm of their affairs, and I think they should think before they speak, and they think before comment in this way. I think it hurts a lot of people. I urge to restrain. I think these kind of situations in this kind of unfortunate incidents, I think one should not be confined to government. We have to go beyond it. And I urge all the senior political leaders, they're experienced, they're the helm of their affairs, and I think they should think before they speak, and they think before comment in this way. I think it hurts a lot of people. I urge to restrain.